नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आम संजीवनी 2.0 सीरीज रो जूलॉजी क्लास रो आउ गोटे क्वेश्चन आउ गोटे चैप्टर को डिस्कशन करबा आउ गोटे चैप्टर क्वेश्चंस को डिस्कशन करबा आउ सेइडार सब प्रॉपर एनालिसिस मध्ये करबा सो दैट हमर अपकमिंग जो रीनीट रो एग्जाम होबा को जाउची सेइडा पई बोली तार से रीनीट एग्जाम रो पर्सपेक्टिव को नै कि पूरा ओवरऑल बेसिस रे आमे सेटा उठी ऑब्जर्व करबा कि केमिदी कोन हमर सेटा बेटर हे परिबो केमिदी आमे इंप्रूव कर परिबा से एग्जाम रे तो से कॉन्टेक्स्ट रे से बेसिस रे आजिरो क्लास टा रहइबो आ आजिरो क्लास रो टॉपिक रहइबो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जोड़ा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स माना को भीतर गोटे ह्यूमन फिजियोलॉजी पोर्शन रे जनरली पिला माने एटार जो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस आउ किछि माने डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ए कांसेप्ट को नै कि जनरली टिके लैग बिहाइंड करंती बट आजरो क्लास रे आई विल मेक श्योर कि तमानगर से कांसेप्ट्स रो क्लैरिटी रहइबो आउ से कांसेप्ट्स को नै कि हमें फर्दर एग्जाम रे मध्ये भलो करि परिबा ठीक तो आउ देरी न करी कि लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास। सो बिफोर वी स्टार्ट तुम माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन नहीं जीवो हैला मु ए पीडीएफ माने क्लास सरीला परे मैं पीडीएफ तो तमानो से डायरेक्टली ए टेलीग्राम चैनल रे शेयर कर देबी आल्सो ए क्यूआर को स्कैन करके मध्ये तुम जॉइन नहीं परिबो और टेलीग्राम चैनल रो नेम होची बायो बाइट्स विथ संजना मैम हम एटा को मध्ये तुम टाइप करिवो जदी टेलीग्राम चैनल रे यू विल गेट द लिंक एंड यू कैन जॉइन इन डायरेक्टली इनटू द चैनल ठीक अछि तो स्टार्ट करिबा ताले क्लास हैला ताले भी क्लास स्टार्ट करिबा आउ डेरी करिबानी चलो फर्स्ट क्वेश्चन इन a reflex arc the neuron responsible for carrying the impulses from the receptor organ to the spinal cord is generally known as multipolar motor neuron carrying efferent impulses to the skeletal muscles, bipolar relay neuron associated with visual and auditory pathways, unipolar or pseudo-unipolar sensory neuron transmitting afferent impulses, neurosecretory neuron involved in hypothalamic hormone release. Yes. So, कौन होगा आंसर? मेरा क्वेश्चन नंबर 1 रे so here एडी जेमि कि क्वेश्चन नंबर 1 रे देछि कि से हमर रिसेप्टर ऑर्गन रो इंपल्स कैरी करबो रिसेप्टर ऑर्गन रो स्पाइनल कॉर्ड ताहले एना हमर निहते ओडे सेंसरी न्यूरॉन कथा होछि एडी हमें सेंसरी न्यूरॉन कथा एठी होछि अच्छा किंतु हाँ किंतु आउ किंतु एडी पचार ना रिसेप्टर ऑर्गन रो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स आर्क रिलेटेड हैला तो इट विल बी pseudo unipolar or unipolar sensory neuron transmitting the afferent impulses आउ एडा ही हमर रिफ्लेक्स आर्क रे गैंग्लिया रिलेटेड हैला ता सहित ये कंसेंट ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी ही जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना क्वेश्चन नंबर 2 गुड मॉर्निंग अभिप्शा which of the following statements correctly differentiates neuroglial cells from neurons in the human nervous system neuroglial cells generate action potentials and directly conduct impulses over long distances neurons divide continuously throughout life whereas neuroglial cells completely lack mitotic ability. Neuroglial cells provide nourishment, insulation, and protection to the neurons without specialized impulse conduction. Neurons mainly form the myelin sheath
mainly from the myelin sheaths, while glial cells participate in synaptic transmission exclusively. Question number 2. B? Yes. Yes. B will be the correct answer here. B will be the correct answer here. ठीक है जी. अच्छा नहीं नहीं B नहीं sorry. C will be the correct answer. Ada. This will be the correct answer. Now they provide nourishment. They provide nourishment without any specialized impulse conduction mechanism. ସେମାନଙ୍କର impulse conduction ପାଇଁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର feature ନଥାଏ, କେବଳ neuroglial cells are formed to provide nourishment, insulation and protection to the neurons without forming any type of other impulse conduction. Impulse conduction ର କାମ ଆମର neurons କରିବ. impulse conduction ର କାମ ଆମ ନ୍ୟୁରନ୍ କରିବ. ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ତାହେଲେ CNS ଆଉ PNS ପାଇଁ ବୋଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ. It is different for central nervous system and peripheral nervous system. So how is it different? How is it different? देखो देखो कौन कौन अच्छे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भीतर न्यूरोग्लियल सेल्स गुड़ाक एपेंडाइमल सेल्स जोटा की helps in the formation of cerebrospinal fluid ठीक तापरे आ गोटे सेल अछि कोन एस्ट्रोसाइट्स हला helps in forming the blood brain barrier हला तापर आ गोटे अछि माइक्रोग्लियल cells. These are known as the macrophages of the brain. And finally the oligodendrocytes which help in the formation of myelin sheath. myelin sheath. ठीक अछि. अच्छा एबे आसा नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दी प्रकार सेल अछि, स्पेसिफिकली गोटे हला सैटेलाइट सेल. ये नरिशमेंट रे हेल्प करे एंड प्रोटेक्शन रे
नरिशमेंट और प्रोटेक्शन रे हेल्प करे आउ स्क्वान सेल्स जोटा कि एइडारे पीएनएस रे फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ रे हेल्प करे helps in the formation of myelin sheath कोडा सेडा होची स्क्वान सेल्स हैला स्क्वान सेल्स फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ स्क्वान सेल करूची का कोठी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे के करूची ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी बात थर्ड the myelin sheath present around axons in the peripheral nervous system is formed primarily by देखो आसी वाला से क्वेश्चन हैला आसी वाला से क्वेश्चन astrocytes regulating extracellular ionic concentration, squam cell wrapping concentrically around nerve fibers, microglial phagocytes derived from mesodermal lineage, ependymal cells lining the ventricles of the brain. Yes. प्रियंका मारे वर्षा होची हां मारे भी वर्षा होची प्रियंका एठी भी वर्षा होची it will be B हैला squam cells wrapping concentrically around the nerve fibers जोड़ा कि हमर peripheral nervous system बा PNS रे देखिया को मिलुची हैला बाकी एस्ट्रोसाइट्स कथा बोली कहले से हम ब्लड ब्रेन बैरियर रे फॉर्म को हेल्प माने फॉर्म करे हेल्प करची सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे प्रेजेंट अछि microglial cells phagocytes derived from the mesodermal lineage yes these are the maxi में बोलते हैं मानो को macrophages of the brain बोली कहा वाला macrophages of brain बोली कहा वाला है ना और ependymal cells lining the ventricles of the brain which help in the formation of cerebrospinal fluid है ना cerebrospinal fluid next one 4 saltatory conduction of the nerve impulses in the myelinated nerve fibers occurs because neurotransmitters diffuse rapidly through the exoplasm continuously. Depolarization takes place only at synaptic terminal of neurons. Action potential jump from one node of Ranvier to another node. Potassium ions enter uniformly throughout the entire myelin sheath. Answer will be C. Action potentials jump from one node of Ranvier to another node. है one node of Ranvier to another node. जदि आमे देखिबा न्यूरॉन रो स्ट्रक्चर ता ताले हमर किछि एई प्रकार रोच न्यूरॉन रो स्ट्रक्चर ता ये ला एक्सॉन टर्मिनल हैला आ से ऊपर हमर किछि जगह रे माइलिन शीथ गुडा प्रेजेंट थाउची किंतु माइलिन शीथ गुडा जो जगह रे प्रेजेंट थाउची किछि जगह रे ना डिसकंटिन्यूअसली प्रेजेंट थाउची हैला एक्जेक्टली पूरा कंटिन्यूअसली प्रेजेंट न थाउची कंटिन्यूअस प्रेजेंस रहिले से पूरा माइलिनेटेड फुल्ली माइलिनेटेड नर्व फाइबर हिजबो जोडा रे की कंडक्शन रे स्लो हिजबो एइरे जेतले माइलिन शीथ एडा हेला माइलिन शीथ हैला जो जगह माइलिन शीथ नाही सेडा को आगला नोड्स ऑफ Ranvier हैला नोड्स ऑफ Ranvier बोली कुहागला अच्छा तो ये गोटे नोड ऑफ Ranvier आ गोटे नोड एमिति ये जो कंडक्शन दा करूची एमिति ये जो कंडक्शन होची मोर इंपल्सेस रो एरा हमर टिके फास्टर कंडक्शन होची ए कंडक्शन ना हमर टिके फास्टर कंडक्शन आ एडा को ही हमर सॉल्टेटरी कंडक्शन बोली कहा जाउची सॉल्टेटरी कंडक्शन बोली कहा जाउची हैला हां आप ऑप्शन नंबर सी हिज वो करेक्ट आंसर 5
Which category of neuron is predominantly associated with the retina of eye and olfactory epithelium? Bipolar neuron possessing one axon and one dendrite, multipolar neuron with numerous dendritic branches, pseudo-unipolar neuron present in the dorsal root of ganglia, commissural neuron connecting the cerebral hemispheres. कौन होगा? Yes, it's A. It's A. है ना? Bipolar neuron. अच्छा कौन कौन अच्छी यार फीचर bipolar neuron में one axon and one dendrite. कोड़ी कोड़ी अच्छी retina of eye और olfactory epithelium है ना? एक retina of eye olfactory epithelium माने nose है ना? ସେଇଠି ମଧ୍ୟ present ଅଛି. Multipolar neuron with numerous dendritic branches ସେଇଟା ଆମର all over the body. All over the body ये present ଅଛି. ठीक. Pseudo-unipolar neuron present in the dorsal root of ganglia. Pseudo-unipolar neuron ଟା ହଉଛି A type ର, ଇଏ ହେଲା ଆମର cell body. Cell body ର ଏମିତି ଗୋଟେ branch ହିଁ ବାହାରି ଥାଏ. ଗୋଟେ branch ହିଁ ବାହାରି ଥାଏ. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ branch ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିକିରି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦିଟା branch ରେ convert ହେଇଯାଏ. ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି it appears to be pseudo-unipolar. It appears to be unipolar. It appears to be ମାନେ bipolar है ना, but it is actually unipolar. तो ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଟାକୁ pseudo unipolar ବୋଲି କୁହାଗଲା. କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା dorsal root of ganglia ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି. commissural neuron ଯୋଉଟା କି ଆମ cerebral hemispheres କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, କ୍ୟାଲୋଜୋମ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି. ଆଉ ୟୁନିପୋଲାର ନ୍ୟୁରନ୍ ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ ଯୋଉଟାରେ ହେଲା, କେବଳ ଏଠି ଗୋଟେ ହିଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିକି ଥିବ. ଆଉ ଏଟା କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଏଟା କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି? These are present in the embryonic stages. Embryonic stages रे देखिବାକୁ ମିଳୁଛି unipolar neurons. Done? Done. Question number 6. During the resting state of a neuron, the inner side of the axonal membrane becomes negatively charged, mainly due to during the resting state of the neuron, the inner side of the axonal membrane becomes negatively charged, mainly due to active influx of the calcium ion into the exoplasm continuously, higher concentration of sodium ion inside the neuronal membrane, differential distribution of ions maintained by sodium-potassium pumps, sudden opening of the voltage-gated chloride channel exclusively. Yes. ଏଇଟାର ଆମର ଯୋଉ membrane potential ଟା maintain ହେଇକି ରହୁଛି, ଆମର କିଛି A type ର maintain ହେଇକି ଥାଏ. ये ହେଲା multipolar neuron. ये ହେଲା axon terminal ତାର ହେଲା, ଭିତରେ ଚାର୍ଜ ଟା ଆମର ନେଗେଟିଭ ଥାଏ ଆଉ ବାହାରେ ଚାର୍ଜ ଟା ପଜିଟିଭ ଥାଏ. ଏ ସ୍ଟେଟ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ as polarized neuron या फिर resting membrane potential है ना, resting membrane potential बोली कुहागला. अच्छा एटा कौन ପାଇଁ होउची? बिकॉज हमर गोटे सोडियम पोटेशियम पंप चलची. से सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा 3 sodium out and 2 potassium in. दीटा तीनटा सोडियम बाहर वाला को दीटा पोटेशियम भीतर को आसुची. तो या द्वारा होउची कोन ना, बाहर पोटेशियम रो कंसंट्रेशन अधिका है बाजू पॉजिटिविटी टा अधिका थाउची आ भीतर पोटेशियम कम थिबा जोगु हैला, भीतर टिके
positivity टा कम था it is not negative, not negative due to the presence of any chloride ions कि हमरो से जो positive ions गुड़ा present नहीं बोली हमरो से negative नुहंती because the positive ion the amount जोड़ा जति कि हमर present रहबा कथा सेति sufficient amount of present न रहबा जोगु भीतर चार्ज टा मोर negative हे जाउछ हैला भीतर चार्ज टा मोर negative हे जाउछ आउ the most abundant intracellular ion will be कौन हम पोटेशियम कहीं पोटेशियम कहीं ना गोटे तो सोडियम पोटेशियम पंप भितर हमर सोडियम बाहर जाउतला और पोटेशियम भितर को आसला एटा गोटे रीजन आ गोटे रीजन कम भाई why तो सोडियम पोटेशियम पंप रे हमर दीटा पोटेशियम भितर को रहउतला सेति पे बोली भितर रो चार्ज हमर पोटेशियम रिच हे गरे थाउची आ गोटे रीजन कोन पोटेशियम पई बोली the membrane is impermeable permeable not थाए membrane टा एरा होची गोटे रीजन तो सेति पे बोली हमर भितर चार्ज टा इंट्रासेल्युलर आयन हमर पोटेशियम रिच ठीक अछि आ एरा होची रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द पोलराइज्ड न्यूरॉन जोडा रे कि हमर भितर चार्ज टा नेगेटिव आ बाहर चार्ज टा पॉजिटिव तबरे डीपोलराइजेशन केतले भाबो डीपोलराइजेशन केतले हबो जते बेले कोनोसी गोटे हमर इंपल्स जनरेशन हेबा जोगु मोर जदि चार्ज टा उल्टा हे जबो माने बाहर चार्ज टा नेगेटिव आसीबो आ भितर चार्ज टा पॉजिटिव आसीबो ताहले हमें कहूचे कि एडी मोर चार्ज रो शिफ्ट हेबा जोगु ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ चार्ज due to the shifting of charge inside and outside the neuron this is known as this stage is said to be depolarized तो एडी डीपोलराइजेशन हे गला त माने एक्साइटेशन हे गला से इंपल्सेस को कैरी करबा आरंभ कर देला ए स्टेज टा को डीपोलराइज्ड स्टेट बोली कहा जाउछ आ डीपोलराइज्ड स्टेट रे हमर भीतर चार्ज टा पॉजिटिव केमे दे होची द भीतर चार्ज टा पॉजिटिव होची ड्यू टू the influx of sodium ions बाहर सोडियम आयन सब अधिक थाउची भीतर सोडियम आयन कम थाउची बाहर सोडियम आयन भीतर को जदी पळे आसी ताले हमर डीपोलराइजेशन बा आरंभ हे गेला ठीक प्रणाम सनातन नेक्स्ट तो एबे इडी कहलो कम पई हबो because of the differential distribution of the ions maintained by the sodium potassium pumps सेति में बोली हमर मेम्ब्रेन रो चार्ज टा ए टाइप रो उल्टा हे थाउची बा एमिति टाइप रो मेंटेन हे रहउची क्वेश्चन नंबर 7 astrocytes perform an important supportive role in the central nervous system because they produce cerebrospinal fluid inside the ventricular cavities remove pathogens by extensive phagocytic metabolic support form the sensory ganglia associated with spinal nerves directly out from sensory ganglia associated with spinal nerve directly, maintain the blood-brain barrier and provide the metabolic support, remove pathogens by extensive phagocytic activity exclusively, produce cerebrospinal fluid inside the ventricular cavities. कौन होगा? Yes, it will be C. है It will be C. Astrocytes गुड़ाक हम blood brain barrier form करछथि और provide करछथि metabolic support. हमर brain और blood भितर एरा माने रहला हमर brain है और ये हमर blood vessel.
ब्लड वेसल भितर आम गुड़ाए प्रकार टॉक्सिन्स था जोटा कि डायरेक्टली आम ब्रेन पाख रिएश्योर करके सेंड करिपरिबा नाही हला तो से केस रे कोन होची देयर आर सर्टेन सेल्स जोटा कि स्टार शेप्ड सेल्स गुडा ये एस्ट्रोसाइट्स गुडा स्टार शेप्ड सेल्स गुडा जोटा कि गोटे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बा फिल्ट्रेशन लेयर भले काम रे आछुंते आ से माने एठू एठी जिबारे एठू एठी जिबारे एठू जिबारे के काम रे आछुंते हला फ्रेश ब्लड गुडा को ट्रांसफर हे पारिबो क्वेश्चन नंबर 8 At a chemical synapse, transmission of an impulse from one neuron to another occurs through direct continuity of of cytoplasm between the adjacent neurons, release of neurotransmitter into the synaptic cleft, mechanical displacement of the presynaptic membrane, passive movement of myelin between the two axons. Yes. Chemical synapse কথা পଚାରିଛି ତ ଏଇଠି ଆମର neurotransmitters release ହେବ synaptic cleft ରେ neurotransmitter release ହେବ synaptic cleft ରେ ତ ଏଇଟାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ electrical transmission of impulses है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस रे कौन होची ना ये है गोटे न्यूरॉन ये है तार एक्सॉन टर्मिनल ये है तार पछरे आ गोटे न्यूरॉन है से माने कौन करिवे ना आर हमर जो एरा है आर डेंड्राइट्स रो आर एक्सॉन टर्मिनल संगे आर डेंड्राइट रो आर एक्सॉन टर्मिनल संगे गोटे कनेक्शन थाउची जोडा को गैप जंक्शन बोली कहा जाउची है ना गैप जंक्शन बोली कहा जाउची एडा हमर टिके फास्टर कंडक्शन दिस इज अ फास्टर कंडक्शन है ना काहे कि एडा हमर डायरेक्ट ट्रांसफर हे जाउची डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंपल्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंपल्स तो एडा हमर फास्टर कंडक्शन ठीक अछि एडा होची हमर फास्टर कंडक्शन किंतु किंतु हमर जो रहउची केमिकल सिनेप्स सेटा कौन होची ना ये है न्यूरॉन ये है तार नर्व एंडिंग एक्सॉन टर्मिनल तापर ये है आ गोटे न्यूरॉन ये है एक्सॉन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल हैला ये कौन करबा हमर सिनेप्टिक क्लेफ्ट थाउची सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्टिक वेसिकल्स थाउची तापर से एक्सोसाइटोसिस करिगिरी ए जो सब तार सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर गुड़ा रिलीज कर सिनेप्स रे जोड़ा कि ये नाउन होची तापर ट्रांसमिट करछि इम्पल्स ए टाइप रा हम इम्पल्स ट्रांसमिशन होची को केस रे दिस इज केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ impulses chemical transmission of impulses आउ ए केस रे हमर कोन होची इट इज कंपैरेटिवली slower conduction okay आउ ए डायरे there is the transfer of impulse occurs through the neurotransmitters next question 8 ये गला 8 थिला ये गला 9 which of the following event occur first during generation of an action potential in a neuron outward diffusion of the potassium ion causing repolarization hyperpolarization due to excessive potassium permeability opening of the voltage gated sodium channel causing depolarization complete inactivation of the sodium potassium ATPase molecules को इवेंट फर्स्ट रे हबो जतबे एक्शन पोटेंशियल हमर जनरेट हबो को इवेंट ता
हम फर्स्ट जिते आम एक्शन पोटेंशियल हम बोली हमको जना पड़े yes the answer will be answer will be C है answer will be C केमिति होची ना हमर एक्शन पोटेंशियल जो बाहर रहउची पॉजिटिव और भीतर रहउची नेगेटिव बाहर सोडियम आयन गुड़ा बहुत अधिक मात्रा रे प्रेजेंट तो जेतेबेले डीपोलराइजेशन होची बोली कहले बाहर नेगेटिव हो जाउची और भीतर पॉजिटिव हो जाउची एटा को ही तो ए स्टेट टा को डीपोलराइजेशन बोली कहा जाउची डीपोलराइजेशन बोली कहा जाउची हैला आ ए स्टेट रे ही हमर एक्साइटेशन ए स्टेट रे ही हमर एक्साइटेशन होची बोली कहउची हैला ए स्टेट रे ही हमर एक्साइटेशन होची बोली कहउची बायोलॉजी रे फुल टू फुल मार्क आछी कोथरे फुल टू फुल आछी दीपक को एग्जाम रे फुल टू फुल आछी देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 microglial cells from the central nervous system are functionally important because because they form insulation myelin layer around the peripheral axons, secrete neurotransmitters at interneuronal synapses, act as macrophage-like scavenger cell during the infections and injury, generate electrical impulses coordinating the voluntary movements. Microglial cells कथा कहछि और microglial cell टा कोन this is one type of neurotransmitter. It is one type of neurotransmitter लिखुछि neuroglial cell. It is a type of neuroglial cell. कोडारे अछि सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे प्रेजेंट अछि जोड़ा कि हमर मैक्रोफेज बोले स्कैवेंजर सेल्स रे काम करछि कौन सी प्रकार जदि पैथोजन हे गला किछि इन्फेक्शन हे गला किछि डिजीज ऑर्गेनिज्म हे गला डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हे गला से माने जदि एंटर करूचंदी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ताले से ताको इनगल्फ कर दो हला आ मैक्रोफेज लाइक स्कैवेंजर सेल्स बोली कहले these are highly phagocytic done. Question number 11. The refractory period of a neuron refers to the condition in which the neuron permanently loses its ability to conduct impulses. Axonal transport of protein becomes completely absent. A second action potential cannot be generated immediately. Neurotransmitter synthesis increases beyond normal physiological limits. NEET रे जदि फुल मार्क आछि ताहाले मते तुमको दीपक प्रॉपर रिवीजन करिया पड़िबो बिकॉज़ लास्ट थरो जो NEET हेतिला मे 3 रे जो NEET हेतिला the level of questions that it had हला बहुत ही बेसिक लेवल जो क्वेश्चन थिला तो सदी भाई बोले यू नेवर नो कि एबे RE-NEET एग्जाम रे से केमिदिया क्वेश्चन पकेबो so it is better to properly revise करिगिरी जेबाडा बेटर होबो तम भाई फुल मार्क आछि त माने तम बेसिक क्लियर अछि हला तम बेसिक क्लियर अछि बेसिक क्लियर करिगिरी तम एबे टिके एडवांस लेवल रो क्वेश्चन सॉल्व करी आरंभ करो ठीक है स्टेटमेंट लेवल रो किछ असर्शन रीजन लेवल रो ए टाइप रो किछ क्वेश्चन सॉल्व करी आरंभ करो इट विल बी बेटर है ना लेवेंडर डी पायल रिफ्रैक्टरी पीरियड कथा पचारछि रिफ्रैक्टरी पीरियड बोली कहले आमे कहूचे कि ए हला गोटे न्यूरॉन ए गोटे न्यूरॉन रो आउटे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करछि गोटे न्यूरॉन रो आउटे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करछि हमरे इम्पल्स ट्रांसमिट करछि हला किंतु गोटे पर गोटे सेगमेंट पर मध्ये हमर इम्पल्स रे ट्रांसमिशन एडु ट्रांसमिशन हला बेलो कौन होची ना इमीडिएटली पुणी आ गोटे रिस्पांस बा इमीडिएटली पुणी आ गोटे इम्पल्स जनरेट कर परिबोनी हैला संगे संगे पुणी आ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर परिबोनी हमें कहूचे कि संगे संगे इन द सेंस कि माने विद इन मिली सेकेंड्स कथा हैला मिली सेकेंड्स कथा रे मध्ये से संगे संगे हमर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर परिबोनी मे बी किछरा मिली सेकेंड्स पर करबो किछरा सेकेंड्स पर कर परिबो हैला
तो से केस रे हमर सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड इमीडिएटली से पीरियड टाको से जो टाइम पीरियड टाको हमर रिफ्रैक्टरी पीरियड बोली कहा जाउछ हला सेम टाइम पीरियड टाको हमर रिफ्रैक्टरी पीरियड बोली कहा जाउछ ठीक अछि डन this is the period during which no other impulse एटा ए पीरियड रे no other impulse can be generated can be generated एगला question number 12 multipolar neuron are most abundantly found in sensory ganglia of spinal nerve containing pseudo-unipolar neuron central nervous system where motor neuron possess many dendrites olfactory epithelium associated with specialized receptor cells vestibulocochlear pathways containing bipolar sensory neurons कहाँ question number 12 yes, Abhishek. Non-responding stage of the muscle and the neuron. Non-responding stage of the muscle and the neuron. Good. Um, hmm. Solve the hard questions. हाँ हाँ हमें further आगू जो sessions गुड़ाक आसबो we will be trying to solve the questions जोड़ा कि हमारा रोची कौन एनसीईआरटी लेवल रे तो रहिबो टिके हमें आउट ऑफ द एनसीईआरटी आउट ऑफ द बॉक्स जाइगरी assertion reason based statement based match the following based ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस गुड़ाक सॉल्व करिबो है ना ए टाइप ऑफ क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व करिबो त एबे फर्स्ट एटा कर दियो मल्टीपोलर न्यूरॉन जोड़े रे कि हमर मल्टीपल डेंड्राइट्स गुड़ा को थाउची गोटे एक्सॉन थाउची हैला मल्टीपल डेंड्राइट्स थाउची गोटे एक्सॉन थाउची सेटा हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर द मोटर न्यूरॉन पोजेस मेनी डेंड्राइट्स एटा इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना ऑप्शन नंबर बी ठीक सेंसरी सेंसरी सॉरी सेंसरी कोची बाइपोलर न्यूरॉन कोडी अछि बाइपोलर न्यूरॉन कोडी अछि हमर retina of eye and olfactory epithelium retina of eye and olfactory epithelium आउ अछि कोन बाइपोलर ही गला हैला बाइपोलर ही गला तबरे आसे यूनिपोलर न्यूरॉन कोडी अछि ना हमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रे फाउंड आउ pseudo unipolar neuron कोडी अछि that is present in the dorsal root of ganglia dorsal root of ganglia so these are the types of the neurons और बाकी तो multipolar neuron को देखिए है ना question number 13 which statement correctly explains the repolarization during the nerve impulse transmission sodium ions rapidly diffuses inward through activated channels potassium ions move outward restoring the resting membrane polarity calcium ions accumulate inside the synaptic vesicles extensively chloride ions actively enter through the ATP dependent membrane pumps ATP dependent membrane pumps हाँ विवशा ठीक अछि वेरी गुड देखो जेतबे हमर नर्व इंपल्स जनरेट होची ना जेतबे डिपोलराइजेशन होची बोली कोजे बा इंपल्स जनरेट होची फर्स्ट तो इनिशियली हमर भीतर रो मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा नेगेटिव थाउची बाहर रो मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा पॉजिटिव थाउची why so because of the presence of more sodium ions outward बाहर हैला बाहर पटे अधिक सोडियम आयन रहइबा जो बाहर पटे लेयर टा हमर अधिक पॉजिटिव बोली कहउचे भीतर रे नेगेटिव
ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଲାରାଇଜେସନ ହବ ତ ବାହାର सोडियम आयन गुड़ाक भितर को मूव कर आरंभ करेंगे जोटा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उल्टा बनईदेव भितर चार्ज पॉजिटिव हो बाहर चार्ज नेगेटिव हो किंतु पुणी तो ए स्टेज रे माने भितर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव है अधिका टाइम बोली न्यूरॉन हमर कंट्रोल करी रही परिबनी हैला तो कौन हम ना एज सुन एज हमर इंपल्स ट्रांसफर हे गला सेते बेले संगे संगे पुणी होते जो सोडियम आयन्स गुडा इनवर्ड आसीथिबो जोडा पई कि हमर डिपोलराइजेशन है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा भितर पॉजिटिव हेतिबो संगे संगे से आउतरे बाहर को लागिबो संगे संगे से आउतरे बाहर को लागिबो आ सोडियम आयन बाहर को बाहरिबा संगे संगे जो आयन टा जो पोटेशियम आयन ना हम इंट्रासेल्युलरली सबुठ अबेंडेंट थिला से आयन टा मध्ये एबे कोन हबो ना से आयन मध्ये एबे हमर किछिटा बाहर को लागि जिवो हैला से एक्साइटमेंट रे से जो रश रे हमर किछिटा सोडियम पोटेशियम आयन्स मध्ये हमर बाहर को लागिवो जोडार स्टेट टारी कि हमर पोलराइजेशन हेबा जगह रे हाइपर पोलराइजेशन हो जाउची पोलराइजेशन रो चार्ज टा हमर -70 रहउची एक्शन पोटेंशियल रो चार्ज टा +30 रहउची किंतु हाइपर पोलराइजेशन जो जोडा रे कि सोडियम आयन बाहर को जीवा संगे रे पोटेशियम आयन्स मध्ये हमर बाहर को पडउछंती सेटार चार्ज टा हमर -90 मिलीवोल्ट रहउची जोडा कि ऑब्वियसली बहुत ही कम टाइम पई बोली रहउची हैना बट जेहेतु एडा हमर देखा जाउची सेति पई बोली वी विल surely consider we will surely consider this the option number 80 b is that potassium ions move outward restoring the resting membrane potential resting membrane polarity एडा हेगला ये अब हाइपर repolarization state रे एडा repolarization है सोडियम आयन बाहर होची एडा repolarization हैला तापरे हमर पुणी आउथरे इनवर्ड कथा होई जी एडा ठीक अछि है ना पोटेशियम आयन्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 nodes of Ranvier are physiologically significant because these regions contain dense myelin preventing ionic exchange completely lack voltage gated ion channels required for conduction permit rapid ionic exchange necessary for saltatory conduction store neurotransmitter vesicles before synaptic transmission nodes of Ranvier are the regions जोड़े कि myelin sheath present नहीं है ना no myelin sheath present no myelin sheath present है ना तो ये कौन कौन सी it permits the rapid ionic exchange necessary for saltatory conduction है ना saltatory conduction ପାଇଁ ବୋଲି जो rapid ionic exchange ଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର node of Ranvier हमको provide କରି पारुଛି ଆଉ saltatory conduction ना हमरो ଟିକେ faster conduction of faster conduction of nerve impulses faster conduction of the nerve impulses है ना next 15 ependymal cells lining the ventricles of the brain are mainly associated with formation and circulation of the cerebrospinal fluid transmission of the sensory impulses to the cerebellum synthesis of catecholamine neurotransmitter in synapses production of connective tissue around the cranial nerves कौन होगा हाँ 120 मीटर पर सेकेंड अभिषा यस सल्टेटरी कंडक्शन रे बहुत जल्दी ही जवाब ट्रांसमिशन बहुत शीघ्र हम है ना it will be synthesis formation and circulation of the cerebrospinal fluid formation and circulation of the cerebrospinal fluid एइडारे हमर कोन होची ना हमर एपेंडाइमल सेल्स गुडा एसोसिएटेड हेकरी थांती also ependymal cells are the types of these are the types of again neuroglial cells of the central
nervous system, central nervous system na neuroglial cells guda. Question number 16. In a polarized neuronal membrane during resting condition, the outer surface generally possesses higher negativity because potassium ion accumulate externally, positive charge due to the greater concentration of sodium ions outside, neutral charge because ions are equally distributed on both sides, excess chloride permeability causing the internal positivity. It is 16 OG B. Positive charge due to the greater concentration of sodium ions outside. ହେଲା ବାହାର ଚାର୍ଜଟା ପଜିଟିଭ ହବ ପଜିଟିଭ ହବ ଆଉ ବାହାରେ ଚାର୍ଜ ଆମର ପଜିଟିଭ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଆଉ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି କାହିଁକିନା ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ପମ୍ପ ଅଛି सोडियम पोटासियम पंप अच्छी से तीन टा सोडियम को बाहर को नेला बेल को दीटा पोटासियम को भीतर को आनुची दीटा पोटासियम को भीतर को आनुची which makes the membrane potential positive because of the presence of greater positive ions outside the membrane आउ पोटासियम आयन्स गुड़ाक हमर भितरे सब abundantly थांती which makes the potassium as the abundant as the most abundant intracellular ion है ना ठीक next 17 which neurotransmitter is completely released at which neurotransmitter is commonly released at neuromuscular junction in the vertebrates. Dopamine regulating reward pathways in the cerebrum, serotonin associated with mood stabilization mechanisms, acetylcholine stimulating contraction of the skeletal muscle fibers, glycine functioning mainly within the inhibitory spinal pathways. Question number 17. Question number 17 the C Payal Abhiksha yes acetylcholine जोड़ा कि हमारा stimulate कोची contraction of the skeletal muscle fiber contraction कोची कोरुथवार अर्थ होची सेडा कोरुथवार अर्थ होची that एडा होची हमारा गुटे न्यूरॉन ना ये है तारा axon terminal है ना ये है skeletal muscle ये है skeletal muscle है ना एठी जेतेबेले हमर नर्व इम्पल्सेस गुडा जनरेट हमार थिबो बा कोनोसी एक्शन डे हमर ग्रो करियर थिबो से केस रे कोन होची ना एडी न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को सब रिलीज हो जाउची एक लेफ्ट रे आ एडा को कहा जाउची कोन एडा मुई कहा जाउची एस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोली एटा को कहा जाउची पिछला और जनरली हमर से जो न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को जोड़ा रिलीज ही थाउची ना ए जो न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को रिलीज ही थाउची these are generally acetylcholine हैला next question number 18 the speed of impulse conduction is comparatively faster in the myelinated fibers because continuous depolarization occurs throughout the entire axial lemma. Electrical resistance across the membrane decreases uniformly. Myelin prevent ion leakage and enables node-to-node conduction. Neurotransmitters are released repeatedly along the axonal length. Myelinated fibers रे हमारा conduction टा faster रुहे comparative to the non-myelinated sheets. कोथि पई because myelin जेतेबेले present थिबो ना हमारा ए axon ऊपर जेतेबेले myelin एडी present थिबो myelin present थिला बेलो को हैला
ମାଇଲିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆୟନର ଲିକେଜ୍ ଏଠି କରେଇବନି। ଅଲସୋ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାଇଲିନ୍ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ନୋଟ୍ସ ଅଫ୍ ରାଙ୍ଗିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଆମର ନର୍ଭ ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆରାମସେ ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକରି ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ସଲ୍ଟେଟୋରି କଣ୍ଡକ୍ସନ୍। ସଲ୍ଟେଟୋରି କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର फास्टर इम्पल्स जनरेट करुचे फास्टर इम्पल्स जनरेट करुचे हैला। तो एठी हे जो हमर एटा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हैला। 18 ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 19 the interneurons present within the spinal cord are primarily responsible for carrying motor impulses directly to the effector organs, connecting sensory and motor neuron during the integration, forming the myelin sheath in the peripheral nerves exclusively, transmitting impulses from muscles towards the sensory receptors. Sensory neuron होचे हमर ए प्रकार न्यूरॉन गुड़ाक। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स जोड़ा कि रिसीव करछे सिग्नल है ना, ये रिसीव करछे सिग्नल है ना। आ मोटर न्यूरॉन होचे से न्यूरॉन गुड़ाक जोड़ा उगी जे कि माने नेई कि जाउची सो दैट हमर माने इंपल्स गुड़ाक जाईकरी गोटे जगह काम रे आसी परिबो है ना। दे प्रोवाइड दी रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स देखेबो हैला। आउ से भितर जो न्यूरॉन गुड़ाक प्रेजेंट थाउची जोटा कि कंडक्शन को हमर मूव करे नेकी जाउची आपको सेडा को कहला इंटरन्यूरॉन्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही जिवो करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी ही जिवो करेक्ट आंसर। 20 एबे आसे हाइपरपोलराइजेशन कथा। Hyperpolarization of a neuronal membrane after an action potential mainly results from prolonged outward movement of potassium ions beyond the resting requirement, immediate closure of all sodium and potassium ions simultaneously, massive inward diffusion of the calcium ions throughout ligand-gated channels, complete cessation of the sodium-potassium pump activity permanently. हाइपरपोलराइजेशन बोली कहले पोलराइजेशन स्टेट आसीबा पई बोली माने पुणी भितरटा नेगेटिव बाहरटा पॉजिटिव हबा पई बोली जेतबे सोडियम आयन रिफ्लेक्स करथुबो हैला। सोडियम आयन रिफ्लेक्स करथुबो ता संगे हमर पोटेशियम आयन्स मध्ये रिफ्लेक्स करबा आरंभ होई छै। पोटेशियम आयन्स मध्ये रिफ्लेक्स करबा आरंभ होई छै सेते बेले हाइपरपोलराइजेशन हो छै। हाइपरपोलराइजेशन रे हमर जो चैनल हमर जो माने मेंटेन हो छै इट इज -7 -90 मिलीवोल्ट है माइनस 90 मिलीवोल्ट। नॉर्मल पोलराइज स्टेट है -70 जेहेतु अधिका नेगेटिव माने अधिका चार्जेस बाहर को काढी दोछि से टिके बेसी नेगेटिव हो जाउछि भितरे सेटा होछि हमर हाइपरपोलराइजेशन। एटा हला ऑप्शन नंबर ए prolonged movement of the outward movement of the potassium ion beyond the resting requirement। resting requirement हमर -70 जाय थिला resting requirement -70 जाय थिला किंतु आमे जेतेबेले पोटेशियम आयन्स को मध्ये से बाहर को नेकी पळेले सेतेबेले हमर रेस्टिंग मेम्ब्रेन रो मध्ये कमी गला चार्ज ता भितरे हैला। सेति पे बोली एडा हो जाउ हाइपरपोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 which of the following structure is primarily responsible for receiving the incoming signal in a typical neuron। incoming signal को receive किए करिवो गोटे न्यूरॉन रे सिग्नल को रिसीव किए करूची एक्सॉन टर्मिनल कंटेनिंग सिनेप्टिक वेसिकल्स dendritic processes specialized for impulse reception, myelin sheath composed of lipid-rich insulating membrane, axonema surrounding the conducting region of the neuron।
Hmm. It will be B. Dendrite processes specialized for into impulse reception. जो dendrites गुड़ाक है जो dendrites गुड़ाक एमती processes देखिए अच्छी ସେଇଠି ଆମର receptors present ଥାଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର neurotransmitter କୁ receive କରିବା ପାଇଁ है ना तो एड़ा ही एला हमारा कौन ना dendritic processes specialized for impulse reception will be the correct answer for the question number 21 है ना question number 22 in the human brain oligodendrocyte differ from the squamous cell because oligodendrocyte form myelin sheath around the axon in the central nervous system participate exclusively in neurotransmitter synthesis that is synapse occur only within sensory ganglia associated with spinal nerves produce cerebrospinal fluid inside the spinal canal directly. Question number 22. Question number 22. हमने already discussion करी भी सारी चे oligodendrocyte और squamous cell रो काम केवल गोटे ये दी जन जाकर काम केवल गोटे ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ the formation of myelin sheath ହେଲା ଆଉ oligodendrocyte myelin sheath ର formation କୋଉଠି କରୁଛି myelin sheath ର formation cerebrospinal ମାନେ central nervous system ରେ କରୁଛି ଆଉ squamous cell ସେଇ myelin sheath ର formation କରୁଛି କିନ୍ତୁ peripheral nervous system ରେ କରୁଛି ହେଲା so how is it different from squamous cell it is different because oligodendrocyte form the myelin sheath around the axon in the central nervous system एमती ही difference थी but functionally they are same question number 23 the synaptic delay observed in chemical synapse is mainly attributed to extremely rapid diffusion of the potassium ions through myelin, time required for neurotransmitter release for the receptor activation, continuous propagation of impulses along the dendritic membrane, instantaneous opening of all voltage-gated sodium channels. दी प्रकार ट्रांसमिशन थिला हमर गोटे हला केमिकल ट्रांसमिशन गोटे हला इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ना हमर टिके फास्टर होची काहेकि ना हमर गैप जंक्शंस रो प्रेजेंस जोगु हला त माने डायरेक्टली इंपल्स ट्रांसमिशन गोटे न्यूरॉन रो आउटे न्यूरॉन को करि पारिबे बट व्हेन इट कम्स टू केमिकल सिनेप्स व्हेन इट कम टू केमिकल सिनेप्स केमिकल री कि जते बेले हमर न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज होची माने केमिकली जते बेले हमर इंपल्स ट्रांसमिशन होची जते बेले हमर न्यूरोट्रांसमिटर्स आर इन्वॉल्वड देयर है ना neurotransmitters are involved there और neurotransmitters गुड़ाक कौन करती से टिके टाइम लगे रिलीज देवा रिसेप्टर गुड़ा एक्टिवेट हम से रिसीव करेंगे एक्टिवेट करेंगे करके जिते बेले से कंडक्शन कला बेले टिके टाइम लगी जाउची तो से ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट आंसर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज एंड द रिसेप्टर एक्टिवेशन 24 a neuron possessing several dendrite and single long axon is classified structurally as simple अच्छी है structure of the neuron ऊपर question ना bipolar neuron associated with special sensory organs unipolar neuron located with dorsal root ganglia multipolar neuron commonly found in the motor pathways afferent neuron restricted exclusively to the autonomic ganglia so it will be multipolar neuron commonly found in the motor pathways है ना multipolar neuron commonly found in the motor pathways question number 25 which event immediately follows depolarization during the propagation of nerve impulses. Sudden synthesis of neurotransmitter molecule in the exoplasm. Repolarization caused by outward movement of the potassium ions. Formation of additional myelin layers around the axon. Permanent closure of all ion channel in the membrane. Depolarization पर संगे संगे कौन होची depolarization रो संगे संगे कौन होची repolarization बस
रिपोलराइजेशन बेले को कौन सोडियम आयन इफ्लक्स होची ता सागरे किछि किछि पोटेशियम आयन से मध्ये इफ्लक्स हो जाउची जोटा कि हमर रिपोलराइजेशन पर स्टेज ता बोली कहूची हाइपरपोलराइजेशन तो डीपोलराइजेशन तापर रिपोलराइजेशन तापर हाइपरपोलराइजेशन हैला तो जते बेले हम देखिबा ना आगे पोलराइज स्टेट रे थाउची न्यूरॉन टा से जते बेले रिसीव करची सिग्नल तो डीपोलराइजेशन हो जाउची तार डीपोलराइजेशन तापर से रिपोलराइजेशन हो जाउची हैला तापर पुणी हाइपरपोलराइजेशन हो जाउची ठीक ए टाइप रा हमर काम करछन हाइपरपोलराइजेशन हैला परे पुणी आउथरे पोलराइज स्टेट रे आसी जाउछन पुणी आउथरे पोलराइजेशन स्टेट रे आसी जाउछन क्वेश्चन नंबर 26 the white matter of the brain appears whitish because mainly because of the abundance of unmyelinated neuronal cell bodies and neuroglia, blood capillary carrying oxygenated blood continuously, myelinated nerve fiber containing the lipid-rich sheaths, synaptic junctions between the interneurons and the motor neurons. Because of the presence of the myelinated nerve fibers which contain lipid-rich sheaths. है lipid-rich sheaths. A grey matter जो ଅଛି ଆମର grey matter ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା because of the accumulation of the cell bodies. Cell bodies गुड़ाकर accumulation ହେଇକିରି ଆମର ଏଇ sheath गुड़ा ସବୁ form ହେଇଥାଉଛି. Question number 27. Which of the following is a characteristic feature of electrical synapse? देखो electrical synapse विषय में हम already बहुत थोड़ा discussion करी साइछे मु पूरा diagram बनेगी मतलब देखि साइछि हैला तो कौन होगा option number A neurotransmitters are essential for signal transmission. Synaptic cleft is extremely wide compared to chemical synapses. Impulses pass directly through the gap junction with minimal delay. Transmission always occurs in one direction only. हाँ ठीक अछि transmission हमर सब बड़े unidirectional होची है ना unidirectional होची वो केस से unidirectional होची it occurs in the case of chemical synapse है ना impulse pass directly through the gap junction with minimum delay yes एडा हो करेक्ट आंसर आ मिनिमम डिले बोली कहले एडा ही हमर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बुझौची हैला इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बुझौची जोठी हमर कंडक्शन रेट ता बहुत अधिक थाए because of the presence of the gap junction directly transmission हो जाए impulses रा गोटे न्यूरॉन रो आगुडे न्यूरॉन को 28 the sodium potassium pump functioning in the neuronal membrane actively transports 3 sodium ion outward and 2 sodium ion inward 3 potassium ion outward and 2 sodium ion inward 2 sodium ion inward 3 chloride ion outward 3 sodium ion outward and 2 potassium ion inward equal number of sodium and potassium ion simultaneously एटा तो हबनी क्लोराइड आयन रो कोनसी प्रकार इन्वॉल्वमेंट रहउनी तीनटा पोटेशियम और तीनटा सोडियम नथाए हैला तीनटा सोडियम मेम्ब्रेन भितरे हैला से कोन करबो तीनटा सोडियम बाहरबो आ दीटा पोटेशियम भितरबो हैला ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 रो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 which neuroglial cells are directly involved in the immune defense mechanism with the brain tissue satellite cells surrounding the neuronal cell bodies in ganglia microglial cells exhibiting phagocytic properties squamous cells producing neurolemma around the peripheral axons astrocytes regulating neurotransmitter concentrations locally ये केस रे कोन हबो ना हमर इम्यून डिफेंस बोली कहले हमर फैगोसाइटिक सेल कथा बोली कहले एरा हमर हि जिवो माइक्रोग्लियल सेल्स जोडा कि हमर सीएनएस रिप्रेजेंट अछि सी हमर कोन को फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी करूची द engulf the foreign pathogen
and dust particles ना dust particles को से मैंने engulf करते हैं option number B ही जो correct answer question number 30 in the resting neuron membrane permeability is highest for resting neuron ray membrane permeability is highest for potassium ion diffusing through leakage channels calcium ion moving through ligand gated pathways sodium ion entering through the voltage sensitive pores large negatively charged proteins passing freely outward कौन होगा potassium ions diffusing through the leakage channel will be the correct option जोड़ा लेगी हमारा membrane टा permeability देखेबा को हमें चेष्टा करछे सेतबेले हैला potassium ions diffusing through the leakage channels question number 31 which of the following best explains the all or none principle of the nerve impulse conduction action potentials vary directly with stimulus intensity in every neuron a threshold stimulus generates a full action potential or none at all weak stimuli produce slower impulses while strong stimuli produce faster impulses. Neurotransmitter release occurs only in the sensory neurons exclusively. माने हमर गोटे स्टिमुलस टे थाई समस्त पई बोली किछि किछि स्टिमुलस गोटे रेंज जाय काम करे गोटे एप्रोप्रिएट रेंज जाय पहुंचीला पर ही हमें कहू जे कि हमर न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को हमर रिलीज हैला गोटे रेंज जाय से पहुंचीला से रेंज जाय से हमर रीच कला पर तापरे हमर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होछि जदी हमर रेंज जाय पहुंचीला ताहले तो से पूरा पूरी हमर जेमिति एक्शन पोटेंशियल देखेबा कथा पूरा प्रॉपर स्टेप पे देखेबो जेते बेले न देखौछि जेते बेले हमर कोनोसी भी प्रकार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हबनी कि कोन बोली कहला हमर जो अल्पटी के थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बा अल्पटी के हमर कोनोसी डिस्चार्ज हो जाय आयंस रो तो से केस से कोनोसी भी प्रकार हमर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हबनी कि एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हबनी है ना तो सेटा को ही हमर ऑल एंड नन प्रिंसिपल बताउची कि ए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट्स ए फुल एक्शन पोटेंशियल और नन एट ऑल question number 32 the neurolemma surrounding the peripheral nerve fiber is formed by successive plasma membrane layer of the schwann cells, astrocytic end feet covering the neuronal synapses extensively, connective tissue originating from the meninges, ependymal cells lining the spinal canal internally. से कौड़ी पचारची जे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पचारची पेरिफेरल नर्व फाइबर्स को पचारची तो इट विल बी दी स्क्वान सेल्स को ठीक अछि स्क्वान सेल जोड़ी हला सेडी हमर पेरिफेरल नर्व फाइबर कथा उठिबो सक्सेसिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर ऑफ द स्क्वान सेल उडा का हमर सक्सेसिवली प्रेजेंट रोय लेयर बाय लेयर रोय हमर ये फॉर्म कुछ 32 दा A 33 which part of the neuron is primarily responsible for conducting impulses away from the cell body? Nasal granule involved in the protein synthesis, dendritic arborizations receiving synaptic inputs, axon specialized for impulse transmission, neurolemma supporting the regeneration after injury. Yes. It will be axon specialized for impulse transmission. Axon specialized for impulse transmission. सी ही तो करूची हमर गोटे न्यूरॉन रा गोटे न्यूरॉन को ट्रांसफर करया पई बोली कहली जो स्ट्रक्चर उडा हमर रहउचंती जो स्ट्रक्चर्स उडा हमर रहउचंती एडा को ही तो हमर एक्सॉन बोली कहला ना है ना ये हमर ट्रांसफर करी नेगी जाउची है ये हमर ट्रांसफर करी नेगी जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन
34. The neurotransmitter released into the synaptic cleft is rapidly removed mainly to prevent continuous stimulation of the postsynaptic membrane, increase the diameter of the synaptic cleft permanently, promote uncontrolled depolarization of the nearby neurons, allow inward movement of the proteins across the membrane. Synaptic cleft ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଁ ବୋଲି ରହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ neurotransmitters ହେଲା they are rapidly removed. Why so? କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଏମିତି ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି so that continuity ଟା maintain ହବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଟା ପାସ୍ ହେଇକିରି ଯିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଆକ୍ସନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକିରି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟା ଆସିବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି to prevent the continuous stimulation, promote uncontrolled depolarization, allow inward movement, increase the diameter of the synaptic cleft. It will be to promote the continuous stimulation of the postsynaptic membrane. ହେଲା ଏଟା ଏଟା sorry to promote coaching to prevent the continuous stimulation of the postsynaptic membrane. ହେଲା option number A. 35. Which statement regarding the unmyelinated nerve fiber is correct? Which statement regarding the unmyelinated nerve fiber is correct? They conduct impulses exclusively through the solitary conduction. Nodes of Ranvier are absent along the length of the axon. Schwann cells completely fail to associate with these fibers. Impulse transmission is always faster than in the myelinated fibers. In the myelinated fibers. Unmyelinated fiber कोड़ा correct ला unmyelinated रे बोली कहले हमर myelin sheath present ही नथिबो myelin sheath present ही नथिबो बोली कहले हमर सेटा रे discontinuity मते रहिबोनी discontinuity मते रहिबोनी myelin sheath पई बोली myelin sheath पई बोली discontinuity रहिबोनी बोली कहले हमको node of Ranvier भी देखा जिबेनी node of Ranvier देखा जिबेनी बोली कहले हमर जो solitary conduction जो impulses पूरा को jump करी करी जाउतिला faster impulse generation देखौतिले सेटा मते होई परिबोनी हैला ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ତ node of Ranvier are absent along the length of the axon unmyelinated ରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମକୁ correct statement ପଚାରିଛି ସେ ହେଲା option number B they conduct impulses exclusively through the solitary conduction always ନାହିଁ ହେଲା ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଆମର solitary conduction କରୁନାହାନ୍ତି Schwann cell completely fail to associate with these fibers they never fail to associate with these fibers. Schwann cells गुड़ा का myelin sheath formation करोचंती peripheral nervous system रे. Impulse transmission is always faster than in myelinated fibers. है ना? Myelinated fiber रे unmyelinated fiber रे in impulse transmission faster myelinated रो ना भूल myelinated रे faster. Myelinated रे faster. ठीक अछि ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ जो ऑप्शन ଟା हमर दिया हला एटा हमर बेस्ट सुटेबली हमर सेट होची जो above question ପାଇଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି option number B will be the correct answer. Question number 36. The threshold potential of a neuron refers to the minimum depolarization required to initiate the action potential, initiate an action potential, maximum membrane polarity attained during the hyperpolarization, constant voltage maintained by the sodium potassium pump, potential difference generated exclusively at the synaptic terminals. हाँ हाँ बताइले ବର୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନରେ ସେ ତ ଦେଖୁଥାଏ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ଦେଖି ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କିଏ ଦେବ କାରଣ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ବେଳେ ମୋତେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ କର କଣ ହବ threshold potential ବୋଲି କହିଲେ the minimum amount of energy by the minimum amount of ଆମର ଯୋଉ depolarization ଦରକାର to initiate an action potential
एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करबा पई बोली जो माने हमर दरकार थाए जित्ते कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सेटा हे गेला हमर कोन ना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following statement correctly describes afferent neurons? Afferent neurons. है ना? अच्छा. They transmit impulses from the central nervous system to muscles. They connect adjacent neurons within the spinal cord only. They carry sensory information from receptors towards the CNS. They form the myelin sheath around the autonomic nerve fibers. A. Okay. Yes, ma'am. Exam देवी. हाँ, सही है तो. मैंने क्लास देखी बस तो बोले बोले एग्जाम किए तो वो बोले. कौन है बेटर क्वेश्चन एफरेंट କଥା କହିଛି एफरेंट बोली कहले से कैरी करबा हमर सेंसर न्यूरॉन्स କଥା କହିଛି एक्चुअली एफरेंट बोली कहले हमर जो रिसीवर ऑर्गन रु नेकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नेकी जिवो सेरा नेकी जिवो एफरेंट न्यूरॉन पुणी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रु पुणी जेतले इफेक्टर ऑर्गन को माने जोडी रिस्पांस दिया जिवो सेठी जो नेकी जिवो जो न्यूरॉन गुडा को से सेट ऑफ न्यूरॉन्स को जाउची एफरेंट न्यूरॉन्स तो दे कैरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टुवर्ड्स द सीएनएस एडा ही जो हमर कोन ना एफरेंट न्यूरॉन जोड़ा को भी हमें सेंसरी न्यूरॉन बोली मत बोलते सेंसरी न्यूरॉन्स बोली मत बोलते ठीक है जी रिसेप्टर टुवर्ड्स द सीएनएस हां ठीक है श्वेता नेक्स्ट 38 which ion channel opening is primarily responsible for the rising phase of an action potential voltage gated sodium channel permitting rapid sodium influx, leakage potassium channel allowing continuous potassium efflux, ligand gated chloride channel producing inhibitory responses, calcium pumps actively transporting calcium outward. A है ना voltage gated sodium channel permitting the rapid sodium influx voltage gated sodium channel रो हमर rapidly sodium ions गुडा influx हेबा जगु एडा हमर कोन होची से permit करचंती हमर action potential generate करिया पे next 39 multiple sclerosis is primarily characterized by degeneration of pancreatic beta cell causing insulin deficiency autoimmune destruction of the myelin sheath in the central nervous system excessive secretion of dopamine from substantia nigra neurons, acute inflammation restricted only to the peripheral sensory ganglia. Good morning, Shubhransu. मल्टीपल स्क्लेरोसिस कथा जो कह जाइए एटा हूँ आमर गोटे न्यूरोनल डिजीजटा जोटा कि एसोसिएट होमर गोटे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सहित ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोली कहले निजर ही सेल्स गुड़ाक निजर ही इम्यून सेल्स निजर सेल्स को जिते अटैक करते आमर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोली कह जाउछि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होची गोटे प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जोटा कि आमर निजर सेल ही आमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो माइलिन शीथ को हमर डिस्ट्रॉय कर दोचंती है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर दोचंती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 Parkinson's disease mainly develops due to the progressive degeneration of the neurons producing acetylcholine within the spinal cord reflex pathways dopamine in the substantia nigra region of the brain serotonin from hypothalamic neurosecretory nuclei glycine in the cerebellar white matter exclusively
Wrong answer. It will be dopamine in the substantia nigra region of the brain. Dopamine in the substantia nigra region of the brain. Parkinson disease रे कौन होगा? एटा एथि में होची काहेकि ना हमरो जो डोपामाइन टा हैला आया जो डोपामाइन टा ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରପର ଜାଗାରେ ରିଲିଜ ନ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରିଲିଜ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଡିସଅର୍ଡର ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ ଡିସଅର୍ଡର ହେଲା 41 Alzheimer's disease is commonly associated with progressive memory loss and degeneration of cortical neurons, hyperactivity of motor neuron causing severe muscle hypertrophy, autoimmune destruction of the peripheral myelin exclusively, increased cerebrospinal fluid production within the ventricles. Ma'am B dopamine. Okay, Shweta. मैम ओयूएटी पाई की प्लीज वीडियो बनातु ओयूएटी पाई बोली ऑलरेडी वीडियो अपलोड चली बबीता है ना ओयूएटी चैनल इट इज ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड आउ प्रति चैप्टर प्रति सब्जेक्ट्स पाई बोली हमर क्लासेस होची है ना और क्लासेस ऑलरेडी आरंभ हो गलाडी मास पूर्व है ना अब क्लासेस हमर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड सब जगह वीडियो ऑलरेडी से चैनल रे हमर अपलोडेड हेगिरे अछि सेठी के विजिट करके देखिबो ठीक कौन है लाइडी अल्जाइमर्स रे क्वेश्चन नंबर 41 गुड मॉर्निंग विश्वा इट इज एसोसिएटेड विथ अल्जाइमर्स उडा ना जनरली हमर एज रिलेटेड डिसऑर्डर हमें कौन जानिचे किछिटा सेल्स हमर एमिति अछंती जोडा कि जी नॉट स्टेज रे थांती दे नेवर डिवाइड वाला स्टेज रे जो सेल्स उडा थांती ना से भितर हमर रहिले किए से भितर रहिले हमर हार्ट सेल गोटे मसल सेल गोटे आ गोटे न्यूरॉन रो सेल गोटे तो न्यूरॉन रो सेल भितर हैला न्यूरॉन रो सेल होचे हमर गोटे इमीडिएट प्रॉपर्टी से पोजेस करछि जोटा रे कि हमर से सेल उडा केबे भी डिवाइड करिवेनी हैला सेल उडा केबे भी डिवाइड करिवेनी तो सेल उडा जदि डिवाइड करू ना ता माने सेल डीजेनरेट तो होछ ना सेल डेथ तो होछि किंतु जदि डिवीजन होनी से सेल रो ता माने हमर एज हैला बेलको सेडा अगर हमर लॉस हे जिवो से सेल गुड़ाक आम सरी 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 जीव तो से सेल गुड़ा सरीबा जोगु वी आर एसोसिएटेड हमर एज रिलेटेड जते बयस बढ़ी बढ़ी जाउछ सेति बोली हमर दिमाग रो बत्ती टिके कमी 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 जाए हैला हमर मेमोरी लॉस हे कि जाए ठीक अछि तो सेति पई बोली हमर अल्जाइमर्स इज कॉमनली अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर जोड़ा रे कि हमर मेमोरी लॉस विथ अकम्पनी हेगिरी आसुची बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स because of the degeneration of the neurons so Alzheimer disease is a age related disorder age related disorder है ना option number A is progressive memory loss and degeneration of the cortical neurons 42 myasthenia gravis is an autoimmune disorder in which antibodies are mainly directed against dopamine receptors located in the basal ganglia pathways acetylcholine receptor present at the neuromuscular junctions voltage gated potassium channel of the sensory neurons, squamous cell membrane surrounding the peripheral nerves. Myasthenia gravis is also associated with our acetylcholine receptors. है ना acetylcholine receptors से कौन होची एडा मध्ये हमर गोटे प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ता जोटी कि हमर निजर सेल्स को मारिया को जाउचंती है ना निजर सेल्स ही हमर अगेंस्ट हे जाउचंती हमर कोन से भी प्रकार डिजीज पाइन बोली माने कोन से प्रकार मध्ये हमर सेल पाइन बोली तो ए केस रे जो acetylcholine receptor उडा थाए हमर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रे सेइटारे हमर एंटीबॉडीज उडा ता अगेंस्ट काम करि जाय हैला एंटीबॉडीज उडा ता अगेंस्ट काम करि जाय ता माने मोर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर उडा जते बेले पड़ी थांता एसिटिलकोलिन रिसेप्टर उडा जते हमर प्रॉपर्ली प्रेजेंट थांता सेते बेले हमर न्यूरोट्रांसमीटर्स उडा हैला न्यूरोट्रांसमीटर्स उडा आसीगिरी हमर एडी एसिटिलकोलिन उडा आसीगिरी बाइंड करथांते हैला एसिटिलकोलिन उडा आसीगिरी बाइंड करथांते और किसी तरह फंक्शनिंग करथांते किंतु एडा केस कोन होची ना हमर से जो एंटीबॉडीज उडा आसुची एंटीबॉडीज उडा आसुची आउ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर उडा ऊपर अटैक कर दोची रिसेप्टर उडा ऊपर अटैक कर दोची जा द्वारा कि एसिटिलकोलिन बॉडी रे रिलीज हेले मध्य
से रिसेप्टर सहित बाइंड हेले से लाइगैंड आउ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करिले सिना सेटा फंक्शनिंग दा करिवो बट एडी जेतु एंटीबॉडीज रो फॉर्मेशन हेबा जोगु से रिसेप्टर गुडा मरी जाउछंदी सेति में बोली हमर आउ एमाने आउ फंक्शनिंग करि पारना तो माइस्थेनिया ग्रेविस मते गोटे प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टा जोडी कि जो एंटीबॉडी गुडा मरुछंदी मते काहे कि मरुछंदी बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्स बिकॉज ऑफ आवर ओन इम्यून सेल्स इन आवर बॉडी जोडा कि जेतेबेले म्यूटेशन किछि हे जाउची से केस रे होउची ना ए टाइप रो कंडीशन हमरा अराइज होची हैला एटा बी हबो श्वेता 43 which of the following neurological disorder is characterized by recurrent episodes of the uncontrolled electrical activity in the brain हाँ एटा कौन है कहला cerebral palsy epilepsy neuralgia आउ एटा कहला meningitis neurological disorder characterized by recurrent episode of the uncontrolled electrical activity in the brain चली थी बस electrical activity hyperactivity रहिबो hyperactivity रो condition रहिबो है ना it will be zoology is easy we have zoology queen अच्छा अच्छा ताले आउ सब्जेक्ट कोन होची आउ सब्जेक्ट खाली zoology रे तो बेड़ा पार हबनी ना श्वेता zoology रे तो बेड़ा पार हबनी हबो एडा हला हमर एपिलेप्सी रे कोन होची ना बारंबार जेहेतु इलेक्ट्रिकल सिग्नल गुडा ना बहुत जोरे ट्रांसमिशन होची हला बहुत जोरे ट्रांसमिशन होची ठीक अछि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोली कहले हमर जो एक्सॉन टर्मिनल जो डेंड्राइट्स मानको एक्सॉन टर्मिनल रो डेंड्राइट्स मानको हमर जो सिग्नल दा आसुची एडो जो सिग्नल दा आसुची से हमर डायरेक्टली गैप जंक्शन थ्रू रे आसुची गैप जंक्शन थ्रू रे आसुची आ से गैप जंक्शन थ्रू रे हमर रैपिड इनफ्लक्स होता है हला रैपिड इनफ्लक्स होता है हमर प्रतिबी हमर माने ट्रांसमिशन सब प्रतिबी हमर कोन ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस बहुत जल्दी होता है आ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जते बेले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जते बेले ब्रेन रे बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे रे ही जाए तो तते बेले हमर रिस्पांस ता दरकार अधिका ही जाए है ना तो दरकार अधिका हो बोली कहले वी विल बी माने कनेक्टेड विथ वी विल बी कनेक्टेड विथ माने कोन बहुत जल्दी जल्दी हम रिस्पांस क्रिएट हो तो जो अननेसेसरी रिस्पांस गुडा मध्ये हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो देखा जाय परिबो हैला सेडा हम एपिलेप्सी रे देखा जाउछ हैला एपिलेप्सी रे देखा जाउछ नेक्स्ट 44 meningitis refers to the inflammation affecting the myelin sheath around the peripheral nerve neuron of the cerebral cortex exclusively protective membrane covering the brain and the spinal cord neuroglial cells lining the cerebral ventricles कौन हबा गुड मॉर्निंग प्रिया रंजन मैम रागिले कि ना ना रागिनी श्वेता मजा करछे मैं जूलॉजी इजी कहलो ना मु कहले कि जूलॉजी रे खाली थोड़ी बेड़ा पार हबो तो आउडा मते इजी हेबा दरकार ना मनस्मिता सी just a minute ठीक protective membrane covering the brain and the spinal cord माने हमर जो ड्यूरा मैटर arachnoid मैटर पिया मैटर हैला एवडा को सब जो लेयर्स गुडा को अछि जो माने कि हमें मेनिंजेस बोली कहूचे से मेनिंजेस गुडा को जते बेले कोन से इन्फेक्शन है कि इन्फ्लेमेशन है जिवो से केस रे हमर मेनिंजाइटिस होची बोली कहबा हैला मेनिंजाइटिस होची बोली कहबा नेक्स्ट हला 45 हैला Bell's palsy mainly involves the dysfunction of the optic nerve controlling the visual impulses, facial nerve supplying the muscles of facial expression, vestibulocochlear nerve regulating equilibrium, glossopharyngeal nerve associated with swallowing. कौन होगा Bell's palsy?
You have B. B, Shweta. Facial nerve supplying muscles of facial expression. ହେଲା ଦେଖ facial nerve supplying muscle of facial expression Bell's palsy ସେଇଟା ଆମର associate ହେଇଥାଏ facial expression ସହିତ facial muscles ସହିତ ହେଲା ଦେଖିବ ଜଣ ଜଣଙ୍କର facial muscles ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମର improperly form ହେଇଥିବ ତାହେଲେ expression ଦେବାରେ ହେଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର facial activity ଦେଖା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟାରେ ଆମର problem ହଉଥାଏ ହେଲା ସେଇଟାରେ problem ହଉଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ facial muscles ଗୁଡାକ ଆମର properly develop ବି ହେଇନଥିବ ନା फेशियल मसल्स गुड़ा प्रॉपर्ली डेवलप भी ही नथिबो ना सेते आमर कोनसी ना कोनसी डेफिशिएंसी बा डिसऑर्डर बा डिसफंक्शन किछ ना किछ देखा जिवो जोडा रोगी गोटे कॉमन एग्जांपल हमें कहि परबे ऑब्वियसली बेल्स पाल्सी तो हेइ नथाय बेल्स पाल्सी रा गोटे एक्सट्रीम स्टेट ता किंतु किंतु जो नॉर्मल नॉर्मल हमर जिंस जो डिंपल पड़ी जोडा कि पिला माने क्यूट बोली कहंदी बट एडा हमर किछि क्यूटनेस रो किछि सिंबल नथाय कि कोनसी प्रकार हमर मैंने कौन कहल क्यूटनेस या फिर ये सुंदर रो ये रो किसी सिग्नल न था हैला अच्छा तो कौन होची हमरो फेशियल डिंपल होची एथि पई काहे ना माने फेशियल मसल्स गुडा प्रॉपर्ली डेवलप हैला फेशियल मसल्स गुडा प्रॉपर्ली डेवलप ही न था सेहि पई बोली डिसऑर्डर गुडा बा डेफिशिएंसी गुडा बा कोनसे ना कोनसे डिफॉर्मिटी ही था हैला जेतले एक्सट्रीम स्टेट रे ही जाउची सेडा को बेल्स पाल्सी बोली कहवा जाउची Question number 46. Huntington's disease is a hereditary neurological disorder mainly associated with uncontrolled jerky body movements and cognitive decline, complete demyelination of spinal sensory neurons, inflammation of meninges caused by bacterial infection, failure of impulse transmission at the neuromuscular junction. मैम आम बॉय समस्त टी नेम टा अलग भावती तुम बॉयटा तुम ना श्वेता it will be uncontrolled jerky movements and the cognitive decline. Uncontrolled jerky movement and cognitive decline. Huntington disease होची हमर hereditary neurological disorder टा जोड़ा कि हमर body movement टा uncontrolled way रे होची body movement टा unnecessary जेतबे रहइबो सेटा हमर Huntington disease cause करेबो आ neurological disease बोली कहले एटा हमर neuromuscular junction रे कोनसे ना कोनसे प्रॉब्लम कॉज करिथिबो सेहि में बोली ए जिंसटा कॉज होची तो एटा जनरली हमरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज रे प्रॉब्लम ही थाई पारे न्यूरोट्रांसमीटर जाएगी तार रिसेप्टर रे बसिबारे प्रॉब्लम ही थाई पारे या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर्ली रिलीज तार डेफिशिएंसी जोगु बा एति कि हमरो सेति थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मेंटेन करिला भलिया सेति कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मेंटेन करला भलिया जदी रिलीज होउनी न्यूरोट्रांसमीटर्स ताहले हमें कहूचे कोन ना इट इज हंटिंगटन्स डिजीज एटारे हमर बॉडी मूवमेंट जर्की बॉडी मूवमेंट अधिक एक्साइटेटरी बॉडी मूवमेंट आउ कॉग्निटिव डिक्लाइन रोच नेक्स्ट 47 which neurotransmitter deficiency is strongly linked with Parkinson's disease histamine dopamine acetylcholine glutamine at disease हमें एरा को कथा ही जाई ऑलरेडी your name is Pupun okay it will be dopamine है ना Parkinson's disease होची मध्ये हमर से न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर टा जोरा में देखिथिले न्यूरोट्रांसमीटर रो जो रिसेप्टर्स उडागो माने सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर उडागो जदी प्रॉपर्ली हमर रिलीज न होची ताहले हमर Parkinson's disease कॉज हे परियो है ना Parkinson's disease कॉज हे परियो it will be answer will be dopamine 48 the region of the brain responsible for the regulation of hunger thirst and body temperature is cerebellum coordinating the muscular activity and posture, hypothalamus maintaining the internal homeostasis, medulla oblongata regulating the cardiac rhythm only, corpus callosum connecting the cerebral hemispheres. कौन होगा?
ये क्वेश्चन बी फार्मा रे आस्थिला अच्छा एटा ऑलरेडी मतलब आमे डिस्कस भी करिथिले ऑलरेडी आमे अन्य क्लासेस रे मध्ये ए पार्किंसंस डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस ए ऊपर सब डिस्कशन करिथिले 48 टा बी हाइपोथैलेमस मेंटेनिंग द इंटरनल बॉडी होमियोस्टैसिस है ना बॉडी होमियोस्टैसिस मेंटेन करिवार काम हे गेला हाइपोथैलेमस रो सेरेबेलम हमर पोस्चर एंड बैलेंस एडा को मेंटेन करूची हैला आउ बाकी आउ कोन मेड्यूला ऑब्लोंगोटा हैला मेड्यूला ऑब्लोंगोटा जदि कहबा सी हमर कोन मेंटेन करूची सब प्रकार इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज सब प्रकार रो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज उडा को बॉडी रो से कंट्रोल करला जेमिति कि ब्रीदिंग हे गला रेस्पिरेशन हे गला उडा सब ठीक नेक्स्ट 49 which part of the human brain is primarily associated with the maintenance of the body balance and precision of the voluntary movements just कहि देली ना just कहि देली thalamus acting as the sensory relay station thalamus sensory relay बड़ा काम करूची सत बाकी it is not associated with our body balance and the precision of our voluntary movements cerebrum controlling higher mental functions ठीक अछि cerebrum हमर higher mental functions intelligence हे गेला IQ हे गेला memory हे गेला ए सब जिन हम cerebrum control करूची जोटा कि होची गोटे हमर मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन बट एटा हमर कोनोसी भी वे रे बॉडी बैलेंस सहित हमर कनेक्टेड न थाए cerebellum coordinating the muscular activity okay pons regulating the respiratory rhythm directly नहीं है ना cerebellum जोटा कि हमर posture और balance को maintain करूची posture and balance को ये हमर रेगुलेट करूची posture and balance को रेगुलेट करूची 50 The largest portion of the human brain responsible for intelligence, memory, and reasoning is the midbrain containing corpora quadrigemina. Cerebrum composed of two cerebral hemispheres. Cerebellum situated beneath the occipital lobes. Brainstem connecting the brain and the spinal cord. कौन होगा? The largest portion of the human brain. Largest portion of the human brain. Just discussion करी भी देले. हाँ, कही भी देली आंसर टा. हमरा largest portion of the human brain जोटा कि first portion टा हैला forebrain. फर्स्ट पोर्शन टा हैला फोर ब्रेन और से फोर ब्रेन रो मध्ये सेरा होची सब लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन से लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन भीतर पुनी तार लार्जेस्ट पार्ट टा हेगला सेरेब्रम सेटा रे हमर सब जिंस हम जति भी सब बॉडीली एक्टिविटीज रे हमर इंटेलिजेंस कथा रहिला या फिर मेमोरी कथा रहिला आईक्यू कथा रहिला सेंस हेबा कथा रहिला कि हमें कोन सेंस करि परचे ठीक भूल जानि परचे केते दूर इनफॉरमेशन को हमें गेन करके ग्रैब करके से नॉलेज टा को हम रिस्टोर कर रखि परचे आ पुनी सेटा जते बेले दरकार पड़ुची सेटा को पुनी हमें सेटा को इंप्लीमेंट करि परचे सेही जिंसडा होचे हमर सेरेब्रम कंट्रोल करूची है ना राधे राधे देविका सेही जिंसडा हमर सेरेब्रम कंट्रोल करूची तो सेइडा हमर दीटा हेमिस्फियर्स डिवाइडेड हेगी अछि से दीटा हेमिस्फियर्स डिवाइडेड हेगी रहला पर से जो लिनिएज बा लिंक जो करूची सेइडा हेगला हमर कोन सेइडा हेगला कॉर्पस कैलोसम तो दीटा सेरेब्रल हेमिस्फियर्स एसोसिएटेड विथ सेरेब्रम सेइडा हमर कंट्रोल करूची मेमोरी आउ इंटेलिजेंस रीजनिंग आउ एक्टिविटीज ऑफ द आईक्यू एवडा को सब ठीक अछि मैम एक्सटेंडेड डेट है जी गूगल रे शो करनी न्यू डेट हाँ 85% ऑफ द ब्रेन वेट देविका वेरी गुड 85% ऑफ द ब्रेन वेट हमारा ये कंट्रोल करछि गूगल रे शो करनी सतस्वता सॉरी सुश्री किंतु तमे ओयूईटी रो ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी रिलीज हे गेलानी जे एक्सटेंड हे जाय डेट हैला गूगल रे अपलोड हेनी मे भी हैला गूगल रे अपलोड हेनी हेई जीव सेटा हैला बाकी मेक श्योर कि तमे डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड रह तो इधर ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर बी है ना ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर तो विथ दिस थैंक यू एवरीवन आज क्लास एतिके पई बोली थिला थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई होप आज क्लास तमाना पई बोली हेल्पफुल रबो क्वेश्चन लेवल केमिति थिला कोन लागिला एंड हाउ वाज इट हेल्पफुल फॉर यू
केते तमे माने आंसर करि पारलो मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणाइबो सी यू नेक्स्ट टाइम विथ सम अदर क्वेश्चन विथ अ न्यू टॉपिक हैला गोटे न्यू टॉपिक संगे किछि नुवा क्वेश्चन संगे पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सो मच एवरीवन और समस्त टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जिवो मु संगे संगे एई क्लास करू तुमको ये पीडीएफ फाइल शेयर कर ठीक अछि थैंक यू सो मच एवरीवन जय जगन्नाथ।